ಏ ಶ್ರೇಯಾ ಇದು ವೈ Good morning, sir. ಹರೀಶ್ RCB ಮನಿಗೋಯ್ತು. What the Good morning, sir. Good morning, sir.
Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, your voice is not hearing. Yes, sir. Sir, very good, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning. sir. Okay.
Okay, now we will discuss the question answers of that poem. Pick out the words. Okay, from the poem, you have to pick the words. Pick out the words from the poem which describes the movement of the bride. Okay, just as she was, having some movement in that palanquin. Okay, just the author, the poet used some words to show or say up about the movement of that bride. So now tell me the words. Sway, Huh? sway, swim, Swim. Okay, correct. Swim is one word. Next, sways is another one. Next, Tears from the eyes. actually, okay. Next, flows. Flow. Okay, flows. Flows Pearl is on a also correct. string. Pearl on a string. No. We are not we are not asking the words which the poet used to compare with that bride. Just we are asking that the words which shows the movement of that girl. So like sway, skim, float. Okay. pearl, glide, Not glide. Glide. Okay. Spring. So these are the words. hang, So again. No. Okay. Maybe hangs. Okay. So the words like sways, skims, floats, springs, glide. Okay. So these are the words falls, the poet used to describe the movement of the bride. Next. How do the palanquin bearers carry the bride? palanquin bearers carry the bride lightly and smoothly. Very lightly and smoothly. Okay. So the palanquin bearers, they carry the bride in a light and a smooth manner. Why do you think the palanquin bearers are carrying the palanquin lightly? Why they are carrying that palanquin, very lightly? Why? Who was sitting in that palanquin? Bride. That's why they are taking it as very carefully, very smoothly. Okay. And they are proud of their job. They are carrying palanquin lightly because the bride who is sitting in that palanquin is precious as a pearl. Okay, so that's why they are taking that palanquin very carefully. Okay. What are the emotions that the bearers feel as they carry the palanquin? So how they were, carrying that palanquin, whether they are unhappy or happy, and They are happy and how they are taking, by crying or singing? by singing. That you have to say. They feel gay and cheerful while carrying the bride in the palanquin. They feel that it is their honor to be carry the bride. Okay, so they are singing and merrily they are carrying that palanquin. Next, why is the bride compared to a flower and bird? They compare flower because she is lighter as flower, and they compare to bird because she screams like a bird. Okay, she is very beautiful and she is Light. okay, delicate. So that's why they compare. Okay. So bride
also like a flower and bird. So just bride is comparing here like a flower and bird. So how flower is smooth, like that she also very smooth, and she also skims like a bird. Okay. So that's why he comparing here that bride to that flower and bird. Next, explain the image in she sways like a flower. Explain that image. Explain it. Just simply explain that how flower will, flow. So the bride in the palanquin moves from side to Moves side. like a flower. So just the palanquin who is sitting in that palanquin, she moves from side to side like flower. When the wind comes, so the flower, it carries the flower, or it it make to move like a flower. So like that. So that's why he compared. Why is the bride referred to as a pearl on string? Why she compared as a pearl on a string? Because the bearers carried the palanquin very softly and lightly. That is what, see, why they are taking very carefully, softly, because she is as precious as pearl. How pearl is precious, na? Like that, the bride who was sitting in that palanquin, she also very precious for them. That's why they were taking care of her. Simple. So bride is referred to a pearl on a string because pearl is a precious thing. Like that, how pearl is precious, like for us, like that, the bride is also very precious. So that's why they're comparing, that pearl to that bride. Why has she been compared to a star? Why is she compared to the star? Yesterday only I have told that. The star which shines even in the dew in the sky, okay, that is the center of attraction in that sky at that time. Like that, the bride who was sitting in that palanquin, she was a center attraction. Okay, so that's why he compares, the poet compares the bride to the star because both were the center attraction. In that palanquin, who is the center attraction? Bride. In the sky, even it's having dew. Who is the, what is the center attraction? Star is the center attraction. Okay. Why do you think the poetess has used two contradictory feelings of love in the fourth line of the first stanza and tear in the second line of the third stanza? So why she used that two feelings? Both are contradictory to each other, and why she used them? Anyone? So yesterday only I have given here from where to where she is moving. Mother, parents' house to husband's house. Husband's house. So now she was, beginning she was very happy because she was moving to where? Husband's house. A new house she was, to the new house she was going. And she feels happy at the beginning. But
later she was started crying. Why? She has to leave her mother's home or house. That's why she was tearing. So these two feelings of hers, those are contradictory to each other, but also the poet used to express them in the poem. Why they used the two contradictory terms here? Because at the beginning she feels that she was going to a new home. Okay, that's her husband's home. So that's why she was very happy. And when she was leaving her parents' home, she was started crying. Okay. Why do the palanquin bearers sing while carrying the bride? What do you think this song is about? Why they will sing? Fastly. Anyone? See, the palanquin bearer. Okay. So they consider that. Okay. So they consider that their work was proud for them. Okay. So their work was proud for them, and so they were carrying a bride. Okay. They were carrying a bride who was unhappy now. Okay. So who was completely covered, completely sad. So now, to remove the sadness from her mind, so they have started singing. And another thing is there. So they don't, they don't want to feel the burden of the physically hardness. That means they are carrying that bride on their shoulders. Or that they're carrying that palanquin bear, so the palanquin on their shoulders. They want to forget that physical stress. So that's why they were singing. Okay. So the main reason is that the bride was unhappy. Okay. She was sad because she was leaving her parents' home. So that's why she was unhappy. To remove that sadness from her mindset, they are singing. Okay, they are singing the songs. And what do you think this song is about? Okay, so this song is about to make her happy. Simple. Next. The poem is full of similes. Why do you think the poet has used so many similes in the poem? Okay, so the poet used so many similes here that to emphasize or to emphasize the beauty and to express the emotions of that bride. Okay, so the poet want to express the emotions and the beauty of that bride, or she want to compare with other things. By comparing with other things, she is used to express that emotion and the beautiness of that bride. So that's why she used simile. Now the question rises that what is simile? Simile is a figure of speech. So they used a simile in the poem. After this poem, you are having in that textbook. So textbook ಅಲ್ಲಿ simile ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದೆ ಈ poem section ನಿಮಗೆ. Simile is a figure of speech. Okay. Then the question rises that what is figure of speech? Figure of speech means, so these are the aspects which make a language beautiful. ಇದು ಒಂದಷ್ಟು things ಗಳು. Okay. So that makes the language beauty. Okay. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. That we have to increase the beauty of that language. So we used such devices. They are called what?
figures of speeches. The first figure of speech is itself a simile. Okay. What is simile? What is simile? Simile is a figure of speech. Okay. So just simply, it is a figure of speech it is a figure of speech where we will Right. right ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎದ್ರ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ರಿ ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ lesson. See, the title of the lesson itself is a figure of speeches. Okay. ಎಸ್ It is a figure of speech where we will compare two things. Sir, grammar ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. See, just take in your classwork book. Okay. So later we will give the figures of speeches. Don't worry. Okay. Just write them in classwork. Okay. Think using like or as. Okay, simple. Here a line will be they will be given give a line. Okay, so what that line will show, that will show the comparison between two persons. It means person to person or person to thing. Okay, so that we will get the comparison here. How we will make the comparison here? By using the word like or as. Now just open your poem and find out the lines. So where she used like. In the second line only, she sways like a flower. She sways like a flower. Just this is the second line. So she is saying that the bride who was sitting in that palanquin, how she sways like a flower. Just comparing, that bride with a flower. Okay, so this is a comparison. We use a word like. So if such a sentence is there, they are example for a simile. Got that? Another one is there. Just watch the third line. She skims like a bird. She skims. She skims like a bird. she floats like a log. She floats like a log. She falls like a tear from the eyes of a bride. Those all. She hangs like a star. Okay, those all are examples for a simile. Okay, so what we will do? That she skims. How she skims? Like a bird. Her skimming is comparing with the birds. So she floats means the bride floats means moves. So okay, simply she floats like how? She floats like a log. Okay, so these things are comparing. So this one is comparing here with log. Skimming is comparing with the bird. Okay, hers, swaying is comparing with the flowers. So by using words like, so this is one kind. Okay.
This is one kind. Idu one thara. This is a what a simile. We have said that, but they will use the word like or as. Just we have given the examples for like only. Now what about as? Just I will write another one here. He is as tall as. He is as tall as. Okay, against. Take it as a camel or anyone. So what the thing you want, take it. Or she is as fat as an elephant. So these are the another example. So here we used as to compare the two things. He is comparing with what? Against. Okay. She is comparing with that animal. Sorry, elephant. So like that, we will compare two things. Okay, by using words like or as. Simple. So that is simile. Okay, here just to watch the two things here. In all these things, we use the first three examples. We use verbs. See, sway is a verb, skim is a verb, float is a verb. Whenever you will use the verb in the sentence, you have to go for like only. Okay. Whenever you use the adjective, okay, whenever you use the adjective in the sentence, at that time you have to go for as. For verbs, like, for adjective, as. Simple trick is there. Okay, this is simile. Okay. So now you got that. So what is simile? Okay, and so which are the lines they used in the poem? Okay. Now, 12th question. Pick out the rhymings. Pick out the rhyming words from the poem and mention the rhyming scheme. So just they have written the rhymes. Okay. So this is a rhyme poem. So write the rhyming words. Okay, tell me the rhyming words fast. Along song. Along. So along with the song. Okay, along song. Next. Dream. 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 Next. Tide bride. Tide bride. Next. Sing string. Sing. 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 Sing string. Okay. Now rhyme scheme you have to write. So rhyme scheme means every line having, we will give the names like A, B, like the letters we will give. Okay. If same kinds of, rhymes they are having. Notice first line along. Okay. That ends with along. Second line ends with the song. Both are having same kind of rhyming. Okay. I will give the name like A. Okay. Both are having the same rhymes. Okay, just give that line A. Okay, next. So next. Sir, answer ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ರಿ? Next, stream dream is there. That is the different one. Okay, that is the different one. Okay, I will take them as the BB. Okay, so here these two are same, but when we are comparing with these two are different. So that's why we have given for this as the same name, for this is the same name. Okay, next, go for the next one. Sing string. Okay, sing string. Again, these two are different. Okay, just I will give the name C. Tide bride. Next, tide. Clear. Sorry, along song is there na? Cry skies. No, along song is there na? Don't forget that. Along song already we used that. Okay. So Yes, sir. okay, that same name you have to give it. Along song again A,
A. Okay. Next, tide bride. Tide bride. So these are the two difference again. Okay. Give it as a DD. Tide bride. Next. Sir, tear beer. Okay. So just you have to take that end rhymes or beginning rhymes only. Okay. In the middle, don't take that. Got that? So they must be at the beginning or they must be at the end. Now sing string already we have completed. Now how to write that rhyme scheme? Okay. Whole poem's line rhyme scheme you have to write. First two lines A. Sorry. A. Second two lines B. Okay. Third CC na? Sing Yes, sir. CC. Where the lines repeated you have to say. Okay. Next a long song repeated. Now you have to write again A. Okay. So they have repeated now here. The first rhyme scheme repeated here. Write it. Next one DD. Okay. After DD, which one repeated? Sing string, that one repeated. Sing string means CC. So write it CC. So this is what the rhyme scheme of the poem. Okay. So how many lines is there? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yes, 4, 3 are 12. Now for every line we have given a rhyme scheme. First line A, second line A, third line B, fourth line B, fifth line C, sixth line C, seventh line A again, because they are having the same rhymes. Okay, 8th, 9th D, 10th D, 11th C, 12th C. Sir, why you taking again A? ನಾನು ಮೊದಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿ ಲಕ್ಷಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ನೋಡಿಲ್ಲಿ. See, just watch the 7th and 8th line. They ended with along and song. Already we are having along and song. Yes, na? Yes or no? Already we are having a long song and we have given the rhyme scheme for that. The same words were repeated in the poem. So that's why we have taken that same rhyme scheme. A. Like that, last two lines, they have repeated as a sing string. And sing string already we use here. That is CC. So that's why we put that as CC again. Okay. Don't worry. Okay. Next. Pick out the examples for alliteration from the poem. So again, it is a figure of speech. Alliteration means a repetition of a consonant sound. Okay. So I will write the definition. So just to take down the rhyme scheme in the classwork book. So now you got that how to write the rhyme schemes. Okay. So alliteration. So write down alliteration is a figure of speech. Sir, alteration means Adi Prasanna, sir. That
Adi Prasanna, that is a different one. Okay. Okay. So write down alliteration is a figure of speech. Figure of speech where we will get the repetition of where we'll get the repetition of a consonant where we will get the repetition of consonants in nearby words. Okay. So alliteration is a figure of speech where we will get the repetition of consonants in nearby words. Okay, they will give the phrase or sentence. So in of them we will get the same the consonant sound or consonant word, we will get the same. Okay. So that line, just watch it. She floats. She floats like a log, from the lips of a dream. Okay, so don't get confused here. She floats like a log, that is simile. Okay, she floats like a log, that is simile. But the whole line is alliteration. How it is the alliteration? So I will tell. Now here we used the consonant L here. Okay. So in the very next word we again used the consonant L, and again here we used the consonant L. The same consonant repeated. So repeatedly we used in this sentence in nearby words. Okay. So L is repeated. Okay. Again L is used here and here. So if just that what we are having, alliteration is a figure of speech where we will get the repetition of consonant. Now L is a consonant. We got it here as a repeated sound. L. Okay. So this kind of a line is example for alliteration. Okay. Just remember that. Okay. So take down these definitions in the classwork. Later, when we will go for the figures of speeches, we will give the definitions and example, everything. Another example, take down. See. I am a man-made machine. Okay, simply watch it. So here M consonant sound, M consonant. Okay. So in nearby words we used repeated consonants. Okay. So that is another example for alliteration. And another line he used here in this poem is
She hangs. She hangs like a star. She hangs like a star in the dew of in the dew of our song. So just watch here. So S sound, S, S, that is repeated. Okay. So only she hangs like a star, that is simile. The whole line is alliteration. Okay, so this is what a alliteration. Next, last one. Some words and lines are repeated in the poem. Works in pairs and list the words and lines that are repeated. So that lines are words which are repeated here. Just you have to make the list of them. So which are the words, lines repeated here? Repeated lines. Lightly or lightly. Okay. We bear her along. So that line is repeated. Not actually that line repeated here. No, sir. Which one repeated here? Along song. Okay. Sir, Gaily, the one second para first line Gaily is there in a third para third line lightly is there, sir. Same line but lightly. Word, at least words are same. Write it lightly, oh lightly, we bear her along. So that is used again. She sways like a flower in the word. Okay. Sorry. Lightly, oh lightly, we bear her along. That is repeated. Gaily, oh gaily, we glide and sing. That's also repeated. Okay. Softly, oh softly, we bear her along. Okay. So these are repeated. Okay, so this is what the end of the discussion of the question answers. Almost we have given every question answers. So tomorrow I will send the question answers of this poem. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. Yeah.
Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So, what we are discussing in previous class, students? Yes. What we are discussing? Are you listening? Yes, students. Ma'am, polyester, acrylic, Yes. nylon. Nylon. So, what are the properties of nylon? Tell me, what are the properties of nylon? Lowest classic material is lustrous and easy to wash. Okay. Can be made into polyester or powder. Yes. Then, only these many? So, we were discussed about, what is that? Nylon. I'll come to the nylon. I was asking that. Nylon. So, what are the things we have discussed in synthetic fibers? In synthetic fibers, we have discussed about rayon, nylon, acrylic, okay, then synthetic fibers. So, what are the uses of nylon? Stretchable. Nylon is a Stretchable and easily washable. it is easily washable. So, stretchable means you can stretch it how you use elastic clothes, no, like that. Okay, you can use it for seat belts and upholstery means, for sofa and all we can use in luxury bus, sleeping facility, all will be made by this. Okay, and ropes, reel thread, okay, swimming weights, raincoats, track suits, fishing, these all materials and making sarees also, we use this nylon thread. Then you come to that polyester. So we have discussed that what is a polyester. Polyester is a combination of alcohol and organic acid. They react together to make compounds called esters, which are polymers. So we have discussed about this, and properties of this also we have discussed. Uses of polyester also we have discussed. So acrylic, this also we have discussed, right, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uses of acrylic also over, ma'am. Have discussed. Then next one is blending fibers. So blending means what, it students? Blending means, for example, if the iron rod is there, means we blend it. So we can make it in different shapes. Okay, like that blending fibers means, terylene and cotton blend. So cotton blender means we
when we get from the plant cotton, no, we have to blend it. Then it becomes, we can make it thread easily. So known as this terracotta is used for making dress materials. By blending, what we get terracotta. Okay, students. By blending cotton is there, no, we will get terracotta that will be used for making dress materials. And terylene and wool blend is known as terry wool. By wool blend, we get terry wool. So it is used as substitute for costly woolen clothes. You know that woolen clothes, so we wear in the winter season. So it is made by terry wool. So these are the products of the cotton. By blending, we get terracotta and terry wool. Okay. So polyester and cotton blend is more crease resistant. Okay. Acrylic and wool blend trousers are less expensive. These acrylic and wool blend trousers will be less expensive. They are not that much costly. But these made by terry wool is there, no, it is very expensive. Okay, woolen clothes are very expensive. Now we come to that, what are the advantages of synthetic fibers? Advantages and disadvantages of synthetic fibers. Okay, so you know that whenever we go to the shop, if you want to buy clothes, what are the things you see students while purchasing clothes, students? Cloth material. Yes. How What things you see first when you go to the shop, when you purchase a dress, you check it all the things like quality you will see first, right? Right? We check that which it is polyester or cotton. Yes, cotton or polyester, and you see that quality also. Is it yeah, good for wearing daily or not, or we should do iron or what? So we'll think all the thing, all the side we think that while purchasing clothes, right? So in this advantages of synthetic fibers means how we think, we'll see that. These synthetic fibers or strong synthetic fibers are strong so they can take up heavy things easily. So retain their original shape. Retain means what is that? They will not lose their color or the shape. Okay, retain. And if we can easily wash and we can wear. And you know that the synthetic fibers are elastic in nature. Okay, they are elastic. They can easily stretchable and they are soft. Synthetic fibers are soft and they are used to clothing materials. You know that synthetic fibers we used to make clothes also. And varieties of colors are available as they are manufactured. Synthetic fibers we can find in the different colors, many colors also. We know that we dye in color. And cost also. Clothes made by synthetic fibers are generally cheaper than those made by natural fibers. Synthetic fibers are artificial, right? It is man-made. That's why they are generally cheaper than the which we get from the natural clothes made by the natural fibers. Okay, these are cheaper than natural fibers. These are the advantages of synthetic fibers. And what are the disadvantages of synthetic fibers? You know that does not absorb moisture. So synthetic fibers, you know, polyester, nylon, rayon, they will not absorb water. So whenever you mop the floor, which cloth we use, students? Mopping floor. While mopping the floor, which clothes you use? Which absorbs? ma'am? Cotton cloth, right? So cotton cloth absorbs water. That's why we used to mop the floor. So this synthetic fibers means nylon, rayon, polyester clothes will not absorb water. So these synthetic fibers do not absorb sweat also. That's why we'll not use in summer season also. Okay, they're trapping heat in our body. Trapping heat in our body means, you know, these cotton clothes trap heat also. You feel cool in the summer season if when you wear it cotton clothes in the summer season. So if you use nylon and polyester, you will not feel better in summer season. Okay, and rough feel, synthetic fibers make you rough feel.
Means rough feel means it is not comfortable, just something itching, or it will be not comfortable to your body. So making it unsuitable for pajamas. So we can't make pajamas from these clothes, synthetic fibers also, and underwear, etc. So it is dangerous to wear near fire. So immediately it catches fire. These polyester or nylon clothes are there, no? They catches fire immediately. That's why we should not wear. When we wear, we should not be there near the fire. Okay. And they cannot be easily ironed as they melt very easily. We can't iron it. If we iron it, they burn it easily. Understood? So we used to iron only cotton clothes or any other clothes. But when you want to do polyester clothes and all, we can't iron it, students. They immediately catch burn, they fire. Okay? So these are the disadvantages of fibrous. The next is plastic. So now this synthetic fibers is completed, students. So we have discussed about the synthetic fibers. So means man-made fibers, artificial fibers, what we say it. And types of this we have discussed. What are the types of synthetic fibers? So first one we have discussed about that rayon. Then nylon, acrylic, polyester, cotton. Okay, these many we have. Cotton is all, it is natural things. Just I have taken from the out of the textbook that, okay. So this is what we have discussed about the synthetic fibers. So we have understood that rayon properties and uses, how do we get, how it is made, everything we have done. And we come to the plastics now. Okay, so in this lesson we are going to learn plastics. You all of you know that plastic. So we have most of the things at our home, plastic things. So whenever you go to the shop, you buy things and you will bring it in the plastic cover, right? So almost all water bottle we see that. Okay, what you purchase water bottle 1 liter, 2 liter, that is also made up of plastic, isn't it? So we learn about the plastic, how it is made, what are the uses and what are the disadvantages. Okay, that we learn. You see some things on the screen, you are seeing that, isn't it, students? Plastic, milk, juice bottles. So whenever you go to the bakery or somewhere, it will be stored in the plastic bottles, liquid things, right? And plastic lumber and play sets, play sets also, some are made by the plastic. You can see that plastic detergent. Ma'am, plastic lumber means what? Plastic lumber means decking. Here wood will be there. For example, if the thing is made by wood, some chairs and all made by plastic. Lumber means, I'll tell you the meaning. Lumber meaning I will tell you. You can see the chair, students. It is a product of the plastic. Lumber is a product of plastic. I'll tell the meaning of that. That is a product name, lumber. And you come to that, types of plastics. In types of plastic, thermostatic plastic and thermoplastics, two are there. What is that? Thermosetting plastics and thermoplastic. In plastics, how many types? Two types, thermosetting, thermoplastic. In that first one is, what is that? Thermosetting plastics. What is this thermosetting plastic means? So it is a product of the plastic. You know that we have discussed about petroleum and all, right? What are the products of the petroleum, students? You know that? Petrol and diesel. Okay. So we have discussed about the petroleum, no? So petrol, diesel are the products of the, what is that? Petroleum. Like that, here thermosetting plastic means there will be some products of plastics, isn't it? So we have seen or we have not seen, but it is made by some things by those products. Okay.
Now we come to that thermosetting. Ma'am, backlight means what, ma'am? Bakelite is a product of plastics we use to make bangles, and you can search it in the net, students. Bangles things we made by Ma'am, melamine means okay, melamine and bakelite are the products of plastics. Okay, these are the products of plastic. These things we used to make bangles and all. People used to make bangles, ornaments. Okay, you just, if you want to understand, you can just check it in the net. I'm telling that bakelite and melamine are used to make things. Okay, plastic bangles, you know, plastic bangles, students. Girls we use, no? Yes, ma'am. That bangles and all made by bakelite and melamine plastic. It is used by the plastic product. You know how bitumen, I'm taking just example. Bitumen is, what is the product of bitumen? vast You know that bitumen is product of what? Petroleum. 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 Okay. So why we use it that? To make the roads. Okay, to make the roads, right? Like that. So this is the bakelite and melamine are the products of the plastics we used to, bangles, some materials we used to make. Examples I will give you that. So girls, I'm telling you that plastic bangles and all we use, no? That bangles and all made by plastic earrings and bangles, ornaments we use, that is made by bakelite and melamine. Okay, this is the product of the plastics. So this thermoplast means thermoset can be molded to set in any shape. I told you that thermoset can be molded means molded means what is converted. Okay, thermoset can be converted to set in any shape. For example, you know that iron is there. So iron is malleable. Iron is malleable. We can make it in any shape. We can make it to thin sheet. Yes, like that. Molded means we can turn into any shape. Molded means making any shape. But it cannot be remolded means once if we use that, we cannot use again. Remolded means once if we given shape is, we cannot give shape to that. For example, you know that these things melt. Okay, these things melt, that we can make it an another shape. For example, iron and all. Okay, when some things which we will not use, no, plastic and all, what we'll do, friends? If you are at your home, if the plastic chair is broken, means what you will do? Ma'am, we will throw that, ma'am. You will throw or you sell it? No, ma'am. You'll throw it. You know, one person will come, that plastic board, these papers and all will be saying, you give it to him, no? Yes, ma'am. You give to him. So what he will do, he take the plastic chair, again they make it the plastic products. Okay, they reuse that plastic products. Okay, plastic chair and all, if we will not throw outside, students, we sell it, means we'll give it. Again what they do, they put in the shop where the plastic products will be making, they put there. Again the plastic materials will be made by the new things. Okay, like that. Remolded means once if we use means we cannot use again. Remolded, again we cannot give it shape. So it is dark in color, hard and resistant to heat and electricity. Resistant to heat and electricity means, you know that iron, what it does, students? Iron, when you take iron near to the electricity, what happens? It absorbs the electricity, ma'am. So if you iron means it attracts electricity. It passes, current passes through it. Okay. But plastic things, if you use, what happens? Is it current pass in this plastic thing? No, ma'am. Current will not pass through plastic things. Iron things means current pass it, isn't it? So
whenever if you want to remove the current wire or you know that some wire will be covered by the pipes, it is used plastic pipes. Okay, the current will not pass through it. Understood? If the things is iron means the current passes through it. If you will get shock, okay, will get shock waves. So if you use plastic things, the current will not pass, will not get plastic. Okay, so this resistance heat and electricity. Resist means opposite. Resistant to heat and electricity means it opposes heat and electricity. And heat means what happens? You know, some vessels we have at your home like cooker. Okay, you have a cooker at your home, you think it is a cooker will be having holder, no students? Black color holder, have you seen? It will be having the holder, no? So to lifting that cooker, we use it. If the cooker is very hot, if you hold this holder, can you feel heat? No, ma'am. No. Then, so it resists heat. It will not, the heat will not pass through this plastic material. Okay. So this is what the proper thermoplastic setting plastic. And it is being widely used for the handle to kettle. Okay, this is only handle for cooker and pan. Dosa pan will be there. So all utensils, some of them which we use to cook food, they will be having these holes. Okay, we use it to hold this instead of burning our hands. Okay, earlier black telephone sets and electric switches, electric lamp holders, pins and plugs were made from thermoset plastic. So earlier means before 10 to 8 years, people were wearing using this thermosetting plastics to, by the way, using black telephone sets. So nowadays we are all using the mobile phones, but they were using the land phones, isn't it? Nowadays we are also using land phones in office, isn't it? Outside and all we are using mobiles. And electric switches. Okay, electric switches means you know that at your home you have electric switches. It is also made by thermoset because of it resists electricity. That's why they were preparing from that. Electric lamp holders were there. Electric lamp holders, they were also made by the thermosetting plastic because it resists electricity. So these are the some properties of thermosetting plastics. Here some examples of thermoset plastic. There is a little bit spelling mistake is there, students. Spelling mistake, thermoset plastic. It became thermoset plastic. Okay. Thermoset plastic, where we use it for handles. Okay. Thermoset plastic, we use it for handles. And you know, fireman's uniform, students. Fireman's will be having the uniform. It is coated with thermoset plastic. Why? Because to made it fire resistant. Understood? It resists fire. If they stand near also, the cloth which they use coat, no, it will not catch fire if they go near also. So that is what thermoset coat that is. And melamine weights. Melamine means I told the students bangles, some things which is made by product of the plastics. Okay, melamine weights we use, girls we use, earrings, bangles and all. And an electric pin, student. And electric pin. So electric pin is also made by the thermoset plastic. These are the some uses of examples of thermo. Next one is thermoplastic is then we'll discuss tomorrow. So where we have stopped our classwork. Yes, students. Acrylic uses. Characteristics of synthetic fibers. Uses of acrylic, ma'am. Uses of acrylic you have to write. Written, ma'am. No, ma'am, they don't. Okay. Next, blending fibers.
blending fibrous. Here pterylene and cotton blend known as terracotta is used for making dress materials. Pterylene and wool blend known as terry wool. Terry wool is used as substitute for costly woolen clothes. Acrylic and wool blend trousers are less expensive. Completed? Yes, ma'am. Ma'am, down sir. Advantages of synthetic fabrics. Synthetic fibers are strong, so they
They can take up heavy things easily. Retain their original shape. Elastic can easily stretch out. Soft synthetic fibers are used in clothing materials. Clothes made by synthetic fibers are cheaper than natural fibers. Cheaper than natural fibers.
Have you completed, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So yesterday I have given homework. Am I given homework or not yesterday? Yes. Is it given any homework yesterday? Yes or no? So this question you did not answer, only students. Explain why some fibers are called synthetic. Shall I tell? Yes. Who is that? Ma'am, Samarth, explain. some fibers are called as synthetic fibers because these are man-made fibers prepared by using chemicals. These are made of small units that join together to form long chains. Some of the examples of synthetic fibers are nylon, rayon, acrylic, polyester, etc. Yesterday I given that. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. Who will tell the Shall I answer? tell? Yes. Any other students? Ma'am, shall I tell, ma'am? Other students I am asking. Living Samarth. Living Samarth I am asking other students. Yes, anybody is there? Deepak? Megha? Ma'am, shall I? Yes, what's your name? Ma'am, Samarth Patil. Samarth Patil. Okay. Some fibers are made by human beings, which are known as synthetic or man-made fibers. These fibers are artificially prepared using various chemicals based on petroleum. Synthetic fibers are made up of small units of substance which combine to form a large single unit called polymer. The examples of synthetic fibers are rayon, nylon, polyester, and acrylic, etc. You told about this first question. I am asking you that. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. Yesterday you have written this question, no? Shall I tell? Okay. Yes. The examples that indicate nylon fibers are very strong. Parachutes and ropes of rock climbing are made of nylon. Nylon is used in making seat belts, fishing nets, and tire cords. Nylon is used in making sports. Okay. Okay. So what is that? Nylon is very strong because that's why we used to make parachutes and seat belts. And do you know that some other examples of nylon? Ma'am, it has high tensile strength, ma'am. Yes. Right, tomorrow so much, students. Third main question is, students fill in the blank. I'm giving you homework. Third main question, fill in the blanks. Synthetic fibers are also called dash or dash fibers.
Then synthetic fibers are synthesized from raw materials called dash. Like synthetic fibrous, plastic is also a dash. This is homework for you. Ma'am, all fill in the blank, ma'am. You have 3 fill in the blanks, right? A, B, C. A, you have A, B, C, 3 fill in the blanks are there, no? These 3 right. The next one is, second question is there, no? Mark the correct answer. Mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fibers because rayon is different from synthetic fiber because what it is. You have to write, tick the correct answer. It has a silk-like appearance, or it is obtained from wool pulp, or its fibers can also be woven like those of natural fibers. Which one is the correct answer? Second main question of that. Mark the correct one. This is one homework. These two you write the homework. Thank you, ma'am. Okay, have you written the homework, students? Yes, ma'am. So these two questions for your homework. Think and write the answer properly. Hello. Hi, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ
ಸರ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಅಂತಿದೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರೀ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಿಕ್ಕು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ರಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇಕನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಳಗಲ್ಲ
हेलो हेलो Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग Good morning, sir. गुड मॉर्निंग ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಮುಗ್ದವು? 5. ಹಾ 5. 5. Sir, 5. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ Yes, sir. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಬರೆದ್ರಿ? ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ್, ಫೇರ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। आज नेक्स्ट लेसन जो देखेंगे समाचार पत्र की आत्मकथा, लेसन नंबर 6। समाचार पत्र की आत्मकथा। जो एक संकलित है, यहाँ पे समाचार पत्र के बारे में बताते हैं, यानी समाचार पत्र किस तरह से हमारे जीवन में प्रभावशाली है। आप सब जानते हैं समाचार पत्र हम किस लिए यूज करते हैं और समाचार पत्र में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और समाचार पत्र लगभग कौन कौन सी भाषा में आता है और इसका मूल रूप कैसे होता है, आप सबको पता है। ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭವೇನು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಕಲನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ। यहाँ पे देखिए इसका पाठ का मुख्य आशय आप सब जानते हैं, समाचार पत्र का रूपरेखा कैसा होता है। यहाँ पे ये समाचार पत्र के छोटे छोटे, यहाँ पे एक तेलुगु है, कन्नड़ है, हिंदी है, इंग्लिश है और तमिल है, यानी अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे क्या किया है उन्होंने बताया है कि समाचार पत्र इस प्रकार से होता है। इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं। आप छात्रों को ये समझते हैं छात्र के समाचार पत्र का महत्व क्या है और समाचार पत्र से हमें क्या लाभ मिल सकता है। कोई बताएगा क्या हमें क्या लाभ मिलता है समाचार पत्र से? हमें देश विदेश की खबरें मिलती हैं। वेरी गुड, हमें देश विदेश की खबरें मिलती हैं। और क्या मिल सकता है बताइए। और उन्होंने विज्ञान का परिचय फिर से बताइए। विज्ञान का परिचय होता है। हाँ, विज्ञान का परिचय होता है। और बताइए, बहुत सारे वहां पे छात्र मुझे मौजूद हैं, दिखते हैं, उनमें से ये छात्र वहां पे जवाब दे रही है कि वो भी आंसर सही है। ऐसे ही अलग छात्रों को भी क्या करना है, जवाब देने की कोशिश करना है। अब ये प्रश्न भी बहुत आसान है कि हम समाचार पत्र से क्या क्या जानकारी हासिल कर सकती हैं, हमें उससे क्या लाभ मिल सकता है, बताइए। हमें इन देश में क्या क्या होती है हाँ वो समझ। हाँ, दिन ब दिन देश में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, हमें घर बैठे बैठे
पता चलता है। अब देखिए आज की तारीख जो 7 है, यानी 7 नवंबर 2020, यानी 7/11/2020, ये क्या है, एक दिन है। ये एक दिन के लिए क्या क्या घटनाएं घटती हैं, सारा का सारा विस्तार एक न्यूज़पेपर में आ जाता है हेडलाइन के तौर पे, अलग अलग के तौर पे। यानी हमारे शहर का आ सकता है, गांव का आ सकता है, राज्य का आ सकता है, देश का आ सकता है, विदेश की भी हमें जानकारी मिल सकती है। यानी डेट वाइज, यानी ये इसे हम कहते हैं दिनपत्रिके कन्नडली ಒಂದು ದಿನದ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ। इसमें अलग अलग संकलन हो सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे प्रचार हो सकते हैं, विज्ञापन हो सकता है, अलग जानकारी हो सकती है, यहाँ पे नौकरियों की अलग अलग वहाँ पे हो सकती है, जो सरकारें योजनाएं बना रहे हैं वो योजनाओं का वहाँ पे विस्तार से बताया जा सकता है। यानी हर अलग अलग क्षेत्र की माहिती हमें देखने को मिलती है, हर एक क्षेत्र की, हर एक वहाँ पे हमें जानकारी मिल सकती है। यानी खेलों से लेके राजनीति और अलग संकलन, फिल्म जो फिल्म विस्तार होते हैं फिल्म के बारे में, और हमारे कहानियां हो, कविताएं हो, सारे के सारे हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। आज जमाना थोड़ा क्या हुआ है, आज का युग थोड़ा आगे निकल रहा है। कैसे? आज हम न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, ये तो पहले से आ रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर में पढ़ने से पहले उसकी जो माहिती होती है हमें टेलीविजन के माध्यम से पता चल रहा है। इसे हम जो कहते हैं टीवी। पहले था न्यूज़पेपर, आप उसका थोड़ा आ गया टीवी, यहाँ पे अलग अलग जानकारी देती है। और इससे पहले आ गया रेडियो। रेडियो भी हमें अलग अलग जानकारी देता है। ऐसे कई, और हमें आजकल मोबाइल में भी पता चलने लगा है कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, और कौन से लोग, कौन सा देश, कौन से खेल, यानी हर एक जगत की हमें जानकारी आज पता चल रही है इन सारे के सारे मामलों से। यहाँ पे देखिए बच्चों को क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना है, समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालना है, क्योंकि समाचार पत्र पढ़ने से हमारे जो पढ़ने की क्षमता है अच्छी होती है। जो हम पढ़ने की जो हमारी क्षमता है, हम अच्छे से जो आप किताब पढ़ रहे हैं ऐसे इससे भी अच्छे तरीके से, और वहाँ पे अलग अलग जो वर्ड आते हैं, अलग अलग वहाँ पे भाषाओं का इस्तेमाल होता है, अलग अलग वहाँ पे संकलित जो होते हैं उनसे पढ़ने के बाद हमारे अंदर क्या होता है, शब्द भंडार बढ़ जाता है। शब्द भंडार को हम और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शब्द भंडार में और भी ज्यादा उन्नति प्राप्ति होती है, और हमारा जो विषय संग्रह जो है, जो हम विषय को संग्रह कर रहे हैं, इस विषय संग्रह में और भी ज्यादा हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए रोजाना कम से कम कोई एक भाषा का एक समाचार पत्र आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो कन्नड़ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कोई सुना हो, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको पढ़ना आता है, आपको क्या करना है, उस भाषा का न्यूज़पेपर लेके पढ़ना है। आपको समझ में आए ना आए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन समाचार पत्र पढ़िए, इससे हमें बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। वहां पे जो अक्षरों का जोड़न होता है, जो वहाँ पे पैराग्राफ होती हैं, वहाँ पे जो लेखक होते हैं, वहाँ पे जो कविताएं होती हैं, और देश के वहाँ पे जो न्यूज होती है, जो समाचार होता है, और राजनीति के बारे में हो, चाहे स्कूल कॉलेज के बारे में हो, चाहे अलग अलग, यानी या एक विषय या दो विषय, बहुत सारे विषय हैं कि मैं नहीं बता सकता। उतने सारे विषयों के बारे में आपको वहाँ पे
जानकारी मिल सकती है। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आपसे अब से आज से क्या करना है, आपको एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना, चाहे सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, दोपहर पढ़िए, कभी पढ़िए, एक दिन में कम से कम एक न्यूज़पेपर वहां पे पढ़िए। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने का मजा तो कैसा है। यदि आप वहां पे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग वहां पे जानकारी के साथ साथ वहां पे आपको शब्द भंडार मिलता है, कहीं से नहीं मिलता शब्द भंडार। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. देखिए, रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं। समाचार पत्र बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है? रोज सवेरे घर में आऊं, दिना ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಡೈಲಿ ರೋज ಸವೇರೆ ದಿನಾಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶ की खबर सुनाऊं, ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸಬಹುದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಂದ್ರಯಾನ ಯಾವ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಮೈ ಕೌನ್ ಹೂ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಯಾರು ಇವನು? अखबार। अखबार जो कहते हैं समाचार पत्र। तो चलिए समाचार पत्र का जो लेखन है पेज नंबर 41, उसे हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से उसका विवरण समझेंगे। हम लोग क्या करना है, अपने अपने किताबों को देखिए, मैं पढ़ता हूँ, किताब देखिए। याद आया आपको, मैं ये समाचार पत्र हूँ। यहाँ पे वो कहा है कि मैं कौन हूँ, वो कहता है याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूँ. ನೆನಪಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾರು? ನಾನೇ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳುವವನು ಅಂತ. सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ, जैसे ही सवेरे होता है, सवेरा जब होता है, सुबह जब होती है, मैं घर के पास दिखाई देता हूँ, घर में दिखाई देता हूँ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಅಂತ. कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती, कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं. कई लोग ऐसे हैं कि जैसे ही उन्होंने बिस्तर से उठा, उनको सामने क्या होना है, अखबार होना है. जैसे ही अखबार को पढ़ा, अखबार को देखा, उनकी सुबह वहां से स्टार्ट होती है. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೇ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಚಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಓದ್ತಾರೆ, ಆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं.
बहुत सारे लोग देखिए सामने कोई एक न्यूज़पेपर टेबल के ऊपर न्यूज़पेपर होता है और चेयर पे आराम से बैठे हैं, बैठ के क्या कर रहे हैं, एक हाथ में चाय पकड़ के चाय पी रहे हैं और एक हाथ में से क्या कर रहे हैं, वहां पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये उनके अलग एक तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ने की। लेकिन यहाँ पे ये समझना आवश्यक है कि बहुत सारे लोग जैसे ही सुबह होती है वैसे ही समाचार पत्र पढ़ने के लिए आतुरत होते हैं, उतरत आते होते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಕಾತುರಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮನೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬರುತ್ತೆ, 6:30 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನೋ ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು 7:30 ಅಥವಾ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಮಾಧಾನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುವ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಮಾನವನ ಒಂದು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಅನ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಅನ್ಬಹುದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆತರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಜು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಾತುರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಿಮಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಮಾನವನ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಸ್ತು ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಂತೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸವಿತಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದ್ತಾರ ಅಂತ. मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मानव को विश्व की सारी जानकारी देने वाला एकमात्र वस्तु, वो भी घर बैठे बैठे, घर ही पर रहते सारे विश्व की जानकारी हमें कहां से मिल रही है? 3 समाचार पत्र से मिल रही है। मैं अमीर गरीब सबके जान का सस्ता और सुलभ साधन हूं। देखिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಬಡವಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಡವಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ समाचार पत्र कहते हैं। समाचार पत्र बोल रहा है गरीब सबके, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूं। यानी उनके जो ज्ञान में बढ़ोतरी आने के लिए, उनके जो ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं एक अच्छा सस्ता और सुलभ क्या हूं, ये साधन हूं। मैं सबको अच्छे तरीके से और सबको घर बैठे बैठे मिलने वाला ये अच्छा वस्तु हूं। कौन? समाचार पत्र। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। देखिए, ये तो आज हमें 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 प्राचीन काल में। अब देखिए, प्राचीन काल यानी अब से एक 600-700 साल पहले, प्राचीन काल या 1000 साल पहले, यानी जब राज महाराज का जो ये न्यूज़पेपर की मशीन आ गई या पेपर जो कागज की मशीन आ गई, उससे पहले किस तरह से संदेश भेजा करते थे। देखिए, प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। देखिए, ಕಬೂತರ್ ಪಾರಿವಾಳ, ಆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು
ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಸಂದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे. संदेशवाहक जो रहते थे वो भी क्या किया करते थे, संदेश को लेकर जाया करते थे. आज के जो पोस्टमैन होते हैं संदेश लेके आते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं पोस्टमैन, उनको हम संदेशवाहक कहते हैं. संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे. आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं. वे कहते हैं, आपको मैं पहले बताया था, टीवी हो, रेडियो हो, मोबाइल हो, टेलीफोन हो, कंप्यूटर हो, ये क्या है, अलग अलग साधन हमें देखने को मिलते हैं. अलग अलग साधन ये क्या है, ये भी हमें समाचार पत्र के जैसे ही काम करने के साधन हैं. हमें वहां पे अलग अलग जानकारी इनसे भी हासिल हो सकती है. अब देखिए, घर बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में भी सबको पता चलता है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है. टीवी में भी आपको पता चलता है. आपके हाथ में मोबाइल है, जो एंड्रॉइड मोबाइल है, उस मोबाइल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, देश विदेश की जानकारी हासिल कर सकते हैं. आपके पास टेलीफोन है, कई एक सेकेंडों में आप वहां पे एक जगह की जानकारी दूसरे जगह तक पहुंचा सकती हैं. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ರವಾನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ತರಹದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ. आगे देखिए क्या कहता है और समाचार पत्र. रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है. देखिए, रेडियो में हम क्या करते हैं, केवल सुन सकते हैं अपने कानों से, वहां पे दिखाई नहीं देता, वहां पे बोला जाता है, सिर्फ हम सुन सकते हैं. सुन के इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है रेडियो में. लेकिन दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा, दूरदर्शन, टेलीविजन, टीवी, दूरदर्शन जो टीवी है, इस टीवी में हम घटनाओं को देखते भी हैं, सुनते भी हैं और उसे हम पूर्ण तौर से देखते हैं. यानी देख कर सुनना और हमको इमेजिन नहीं करना पड़ता. इसलिए दूरदर्शन एक ऐसा साधन है, वहां उसके माध्यम से हम सुनने के साथ साथ उस घटना को देख भी सकते हैं. सच्ची घटना जैसी है वैसे वहां पे दिखाया जाता है. कहीं पे ज्यादा से बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, उस बारिश को हम देख सकते हैं. इस साल देखिए हमने कई कई जगह बहुत बारिश हो गई. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಯಿತು. ಆ ಮಳೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ, ಇಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಣ ಸಹಿತ ಧ್ವನಿ ರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆಹಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂಬೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಜಾಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. इसलिए वो कहती हैं, दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है. घटनाओं हमें हम देख भी सकते हैं. लेकिन इन सभी में से सरल और मितव्ययी साधन हूं और लोगों तक सरल
तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ। ये सारे के सारे क्या हैं, चाहे मोबाइल हो, रेडियो हो, दूरदर्शन हो, टीवी हो, ये क्या है, थोड़ा सा हमें क्या लगता है, महंगा लगता है। ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಖರೀದಿಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆದರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಏನಿದೆಯಾ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ. ಕೇವಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ. ಆ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಸರಳ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಸಾಧನ, ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ, लोगों तक। जो लोग हैं, जो मानव हैं, मुझे पढ़ने वाले हैं, उन तक मैं कई अलग अलग समाचारों को वहां पे क्या करता हूँ, पहुंचाता हूँ. इस तरह से मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ये समाचार पत्र बोल रहा है. आइए देखिए, भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजेट नाम से सन 1780 में बंगाल गजेट के नाम पर, कौन सा, बंगाल गजेट, देखिए बंगाल गजेट पहला जो 1780 में जो अंग्रेजी भाषा में प्रकट होता है, उसका नाम है बंगाल गजेट नाम से सन 1980 में प्रकाशित हुआ. आपको याद रखना है, अंडरलाइन कर लीजिए, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವುದು, ಬಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟ್ ಸನ್ 1780, 1780ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ दिनपत्रिके बंगाल गजेट. हिंदी में उदंत मार्तंड नाम से और कन्नड़ में मंगलुरु समाचार के रूप में सन 1843 कौन सा, हिंदी में उदंत मार्तंड और कन्नड़ में मंगलुरु समाचार. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯಾವ 3 ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 1843ರಲ್ಲಿ ಇವು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ. ಯಾವುದು, ಬಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟ್. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಂತ ಮಾರ್ಕಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಉದಾಂತ ಮಾರ್ಕಂಡ್, ಇದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ. ಇದು ಹಿಂದಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಉದಾಂತ ಮಾರ್ಕಂಡು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ 1843ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 1780ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉದಯವಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜಯವಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರು ಬಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟ್ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 1843ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರು ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ.
ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಮಾಚಾರದ ಹೆಸರು ಉದಾಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಅಂತ. ಇವು ಮೂರು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता हूँ. वर्तमान काल में आज का जो काल है, इस काल में मैं बहुत अलग अलग भाषाओं में हजारों रूप से मैं वहां पे क्या हो रहा हूँ, प्रकाशित हो रहा हूँ. नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ. देखिए अलग अलग नाम वहां पे उन्होंने दिया है. आज के इस काल में प्रकाशित होने वाले अलग अलग समाचार पत्रों के नाम हैं. पहला आता है नव भारत टाइम्स, दूसरा आता है हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, विजयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से अभी हैं. अब ये सिर्फ उन्होंने जो इंग्लिश और हिंदी कन्नड़ में 3 भाषाओं के मात्र वहां पे प्रकाशित होने वाले नामों को लिया है. अभी तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, मराठी है, ब्रज भाषा की है, अलग अलग पंजाबी भाषा की है, खड़ी बोली की भाषा की है. यानी ऐसे हम नहीं जान सकते उसमें सारे के सारे भाषाएं वो न्यूज पत्रिकाएं क्या हैं, मौजूद हैं. यानी अलग अलग भाषाएं वहां पे इस्तेमाल करके समाचार पत्र बन सकते हैं, बना रहे हैं. मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूं. इस बात को क्या करना है, अंडरलाइन मार्क करना है. अंडरलाइन ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವುದು मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूं. ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಮಾಸಿಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है. और वे कहता है विषय की दृष्टि से हम देखेंगे कौन कौन से विषय यहाँ पे हो सकते हैं. कौन कौन से विषय होते हैं यहाँ पे समाचार पत्र में? सामाजिक आता है, धार्मिक आ जाता है, साहित्यिक आ जाता है, आर्थिक आता है, सांस्कृतिक आता है, मनोरंजक आता है. यानी वहाँ पे सारे के सारे विषय आ जाते हैं. अलग अलग विषय वहां पे आ जाते हैं, चाहे वो क्रीड़ा हो, राजनीति हो, धार्मिक हो, साहित्यिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, मनोरंजक. यानी अलग अलग विषय वहां पे हमें देखने को मिलते हैं. सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर. ओके, तो आज यहीं पे क्या करेंगे, समाचार पत्र को हम यहीं पे रुकेंगे. जो बचा हुआ जो पाठ है कल की अवधि में फिर से हम देखेंगे. तो चलिए इसी पाठ के माध्यम से आपको मैं कोई अलग अलग वहां पे प्रश्न पूछता हूं. आपको क्या करना है, उनके जवाब देना है. दोगे? तो पहला प्रश्न यह है कि
आप सब तुमने जो सुना समाचार पत्र के लेख के समाचार पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं, कौन कौन सी भाषा में आता है, कौन कौन से क्या होता है, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहले हमारे भारत देश में कौन सा किस नाम से समाचार पत्र आ गया? बताइए। ಹೇಳ್ರಿ अजय। जंपा। सर अब एक बार क्वेश्चन पूछे सर। हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछा हूं कि भारत देश में सबसे पहले कौन सी भाषा में न्यूज़पेपर आ गया, प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी। अंग्रेजी, ओके। यानी इंग्लिश पेपर में न्यूज़पेपर आता है। अब ये आने का डेट कब है, कौन सी ईस्वी में आता है? 1780। हाँ, 1780। हिंदी में बताइए, 1780। इसके बाद मंगलूर समाचार और उदान समाचार कौन सी ईस्वी में आता है? 1843 सर। 1843। 1843। हिंदी में कितना बोलता है? 1833। हाँ, हिंदी में बोली मुझे, हिंदी में 1800 कितना होता है वो आगे का है। 43 को हिंदी में क्या कहते हैं? 1843। 45 नहीं, 45 का मतलब 45। 47 सर। हाँ, 47 47 मतलब 47। सर 1844। हाँ, 1843। हाँ, वेरी गुड। 1843। 43 यानी 40 पे 3, 40 उल्टा आता है यहाँ पे। आपको हिंदी में भी अंकों को देखना है। सिर्फ इंग्लिश में 1843, 1970, 1870 नहीं आता। आपको कन्नड़ भी जाना है, इंग्लिश भी देखना है और हिंदी भी देखना है। तीनों में आपको देखना है। इससे कन्नड़ में क्या बोलते हैं? कन्नड़ में कितना बोलते हैं कन्नड़ में? 1843 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಅಥವಾ 1843 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1843 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಅಥವಾ 1843 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ओके, तो ऐसे कुछ अलग अलग नाम बताइए। आज जो प्रचलित आज हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो, कन्नड़ हो, अंग्रेजी हो, कोई क्यों ना हो, कई ऐसे 10 नाम बताओ जो आपको पता है न्यूज़पेपर के नाम। प्रजावाणी, दक्कन हेराल्ड। हाँ, 2 हो गए। विजयवाणी। वेरी गुड, विजयवाणी। उदयवाणी विजय कर्नाटक। हाँ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ। हाँ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ। ಮತ್ತೆ संयुक्त कर्नाटक कन्नडप्रभ। हाँ, ಮತ್ತೆ वेरी गुड, संयुक्त कर्नाटक। नया भारत। हाँ, और उदयवाणी। उदयवाणी बोलिए। नया भारत। नया भारत। दैनिक भास्कर। और बॉम्बे न्यूज।
ओके, राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, समाचार पत्र के नाम तो आ गए, लेकिन समाचार पत्रों में कौन कौन से विषय के आधारित पर होते हैं, कौन कौन से विषय इसमें छिपे हुए होते हैं? सर क्वेश्चन अब एक बार पूछो सर। समाचार पत्र में कौन कौन से विषय छुपे हुए होते हैं, या कौन कौन से विषयों के विषय वहां पे मौजूद होते हैं समाचार पत्र में? स्पोर्ट्स, राज्य के विषय, खेल का विषय, कानून की जानकारी, मौसम की जानकारी, के विषय पर होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क पकड़ रहे। समाचार पत्र में कौन कौन से समाजशास्त्र, विषय होते हैं? लिख लीजिए। क्लास 4 सर।